A very good evening to all of you. Welcome to Law Entrance YouTube channel of Adda 24/7. आज देखिए हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. हाउ टू राइट एन आंसर इन सेमेस्टर ऑफ लॉ एग्जाम. सबसे पहले ये टॉपिक क्यों आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, बिकॉज दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो भी भाई 5 साल का लॉ कर रहा है या 3 साल का लॉ कर रहा है, मतलब सबके अंदर यही माइंड में आता है कि कैसे हम लोग आंसर्स लिखे जिससे हम लोग को एटलीस्ट 60% फर्स्ट डिग्री तो आ ही जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एडवोकेट निकिता सिंह. आई हैव डन माई BA LLB and I am the rank holder in my graduation, and I have done the masters, that is LLM, and I am the gold medalist in LLM. So that's why मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं. ओके मैम, प्लीज ऐड इंग्लिश सबटाइटल. ओके सो बेसिकली इसमें क्या है आप लोग का, जैसे सेमेस्टर में जो 3 साल का लॉ करते हैं उसमें क्या है, आप लोग सब जानते हैं 3 साल के लॉ में आप लोगों को 6 सेमेस्टर करना होता है, और जो 5 साल का लॉ करते हैं उनको 10 सेमेस्टर को कंप्लीट करना होता है. बिकॉज सेमेस्टर में आपको क्या है, सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है. सब्जेक्टिव में कैसे पेजेस को भरा जाए. कई लोग तो बस पेज भर के आ जाते हैं और जब मार्क्स कम आते हैं तो बोलते हैं कि अरे मार्क्स क्यों कम आए मेरे. तो मार्क्स क्यों कम आए, इसका रीजन होता है कि भाई आपने आंसर राइटिंग को अच्छा नहीं लिखा होगा. ओके, सो नाउ लॉ एग्जाम सेमेस्टर बेसिकली एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. एक क्वेश्चन आपके सामने है. अब इस क्वेश्चन को मैं लिख के बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे, सपोज अभी मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मान लीजिए 10 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन? आप लोग के 10 मार्क्स का है. सो अब 10 मार्क्स में मान लीजिए हार्डली यू हैव टू फिल 7 to 8 पेज, या मैक्सिमम 10 पेज अगर भरेंगे तो मे बी आप लोगों को 8 से 9 मार्क्स मिल ही सकते हैं. जैसे ये पॉसिबल नहीं होता लॉ में, जैसे स्पेशली 3 साल के लॉ डिग्री में कि आप लोग को 90% मिल जाए, लेकिन 5 ईयर लॉ में चलता है. 5 ईयर लॉ में तो लोग के 95-99% आते हैं अपने ग्रेजुएशन में, बट 3 ईयर में ये इतना ला पाना मुश्किल है. बट चलिए क्यों ना हम एक हिस्ट्री क्रिएट करें, क्यों ना एक ऐसा आंसर राइटिंग लिखें जिससे टीचर उसमें काट ही ना सके. तो देखिए कैसे हम इस चीज को करेंगे. सपोज दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज डॉट, व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डॉट एंड लॉ ऑफ डॉट्स. सिंपल सा लॉ ऑफ डॉट आपका एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट होगा. तो मान लीजिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आप लोग को इसको कैसे लिखना है. See this point. इस एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगी. जो भी आप लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इन एवरी 10 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट एटलीस्ट दीज पॉइंट, एंड इफ यू राइट दीज पॉइंट देन इट इज, आई एम नॉट सेइंग द 50%, आई एम सेइंग यू 100% गारंटी है. अगर आप ये पॉइंट्स लिख के आए तो आप लोगों के मार्क्स 80+ होंगे आउट ऑफ 100. 80+ आउट ऑफ 100. जैसे सेमेस्टर में कई बच्चों के 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, बहुत से ऐसी चीजें आते हैं. वैसे Adda 24/7 भी आप लोग का सेमेस्टर का कोर्स भी शुरू करेगा जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, और हर एक सेमेस्टर का आप लोग को लॉ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा. अब्दुल्ला खान, आप लोग का अदर लॉ एंट्रेंस में जो ये चैनल चल रहा है, इसमें आप लोग का जो बैच बनेगा वो जनवरी 2002 से 22 से बनेगा. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 जब आप लोगों का फॉर्म आना शुरू होगा तब हम लोग बैचेस को बनाएंगे. ठीक है अब्दुल्ला, डन. अभी हमें क्या करना है, अभी छोटा मोटा मैं आपको बेसिक चीज बताती हूं लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए लॉ का. ठीक है, तो अब चलिए करते हैं कैसे क्वेश्चन को लिखें. सबसे पहला अगर मैं बोलूं इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है. सो सी, सपोज
किसी भी टॉपिक का लॉ ऑफ टॉट का इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि टॉट कैसे आया। ये आपका जो टॉपिक है इसके बारे में पहले अपना खुद का लैंग्वेज लिखेंगे कि टॉट का इनिशियल स्टेज क्या था। ओके कुटलरी, ओके। So in this topic, if I talk about the introduction, so in this question that what is taught, you have to write that first of all in introduction about the history of taught, because we are talking about the question which is of 10 marks. Got it? So in this one, first of all you have to write this law of taught, that where it come from. Okay, this is the first one in introduction. Then the second one, that in the easy language, what do you mean by the term taught? In a very easy language, because as we know that the taught means simply a wrongful act. Okay, so that's why in introduction, the history and the taught in your language, it should be the highlighted point of this point, introduction. Got it? Now, second one, meaning of taught. Now, in the meaning of taught, just try to explain in this particular point, you have to write the different, first of all in the semester, I think you will all have to read the book, okay, the many law book. But if you know the exact meaning of taught, suppose you have read the two authors book. Now by combination you have to write the definition in the meaning of taught. Suppose you have read 2 or 3, you have just read from the, then you have to write author's name and its definition. This is the what exactly definition portion said about anything. Because introduction, meaning and this definition, these 3 points should be the key point, or the answer of any 10 marks question should be start from these 3 points: introduction, meaning and definition. So in definition you have to write the only exactly the author name and its definition. If you are capable to mug up the exact wording of the exact wording, you can write the exact wording of the author and your language, but your language should be based on these author points. Got it? So introduction, meaning and definition is clear to all of you. Kutluri and Abdullah, that is clear to all of you. Now, next, essential points of taught. This is what the exact, this point. In essential points, the taught have only 3 essential points. Got it? What are the essential points? First, second, third. In taught, there should be wrongful act, legal remedy and legal damage. So this is exactly the 3 essential points of your taught, and in this way you have to write, first of all just write down the heading, done, and then whatever you know about these things, at least 2 or 3 line, 2 or 3 line, 2 or 3 line. And suppose अगर आप इसमें simply एक example को भी लिखते हैं, if you write a one example of each point, then it will be really very impressive way that the teacher can easily give you a high marks, very highest marks. So that's why in each 3 points you have to write the example also. So I think if you just write the example and the 2 or 3 wordings of all these points, so at least I think 2 or 3 page will already fill up in this point. Done. Now, chart of law of taught and law of taughts. This is very good one. Suppose this is in any question of comparison chart, what you have to write: basis, this is law of taught, and this is law of taughts. Okay,
So in every comparison chart, you have to just draw a diagram like that. Now see, suppose first of all, if I talk about the definition, then you have to write this word definition here and exact meaning of this one. Second, author who give this law of torque, just write down the name of that author. So in that way, you have to write the comparison chart of this one. Got it? Now, in any question of law that is of 10 marks, 5 marks, what you have to be focused, that is section, illustration and related cases. In this point, that is an essential point, we have write the 3 essential point, and if you add the cases of these 3 points, then it will be really, I think the teacher will definitely give you 9 out of 10. 3 cases in this, example 3, and if the tort have a section but the law of tort do not have any section, so you do not need to write any section of this question. So in that way, if you write your answer, then the teacher will definitely give you 9 out of 10 marks. This is the way which I used to write in my graduation and in my post graduation. Any doubt, Kutleri, Abdullah, in this topic, that how to write an answer? So follow this point if you want to answer को बहुत अच्छा बनाने के लिए. You have to follow this point. In 5 marks question, in 10 marks question. In 10 marks, you have to follow all these points, but if it is of 5 marks, then you have to at least write definition, essential and this point. This is important. Kutluri, what you have, just tell me your problem. So this is the way to write any answer, because in my graduation and post graduation, I generally used to write these point. And I just also highlighted this particular, this one, introduction, meaning, etc. So if you just highlight it, then the teacher will definitely see the first of all highlighted word, and then he or she will see the other this one content. Yes. So this is basically about how to write any question in your LLB semester. Okay. So if you have any doubt regarding any question, okay, you have no doubt. Okay, Kutluri. So you have any doubt regarding the law entrance batch? So definitely this batch will be going to be start from the January 2022. Why? Because your all law exam will be starting from the January. Okay, the form will be starting from the January. Okay, so if you have any doubt, you can easily just mail in my mail ID, or you just click on this Google form, then the reply will be automatically come. Done?